अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 की केमिस्ट्री के अहम मुख्तसर और तफसीली सवालात के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये सवालात अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो पेपर को अच्छी तरह हल कर सकेंगे और अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज अहम मुख्तसर और तफसीली सवालात के हवाले से बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो की इत्तला बज़रिया नोटिफिकेशन मिलती रहें। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, डिफाइन हाइड्रेशन एनर्जी विद एग्जांपल, डायमंड इज़ नॉन कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर, वाई ionization energy increase from left to right in a period, justify. How does hydrogen resemble with group 4a elements? Why oxidation number of noble gases is usually 0? What is electron affinity? Give its trend in periodic table. Justify the position of hydrogen at the top of group 7a elements. Give reason that hydration energy of Al3 ions more than Mg positive 2 ion. Give differences of lithium from its own family members. Why the size of an anion is always greater than its parent atom. Name various classes of hydrides. Why metallic character increase from top to bottom in a group of metals. Alkali metals give ionic hydride. Why? गिव 4 यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। चैप्टर नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनमें गिव ट्रेंड्स ऑफ मेटालिक करैक्टर इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स एंड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एटॉमिक साइज ऑन इट, एक्सप्लेन द टर्म पीरियोडिक टेबल एंड डिस्कस द इम्प्रूवमेंट मेड इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, व्हाट आर हाइड्राइड्स, डिस्कस देयर क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें वाई डज हाइड्रोजन रिजेंबल विद अल्कली मेटल्स, राइट द फार्मूला ऑफ बोरैक्स, गिव फार्मूला ऑफ नाइट्रॉन एंड हलाइट, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड प्रोपानॉल, गिव 2 सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, राइट केमिकल फार्मूला ऑफ बराइल एंड ब्राइट. What are 2 major problems faced during the working of diaphragm cell? Why Dawn cell is preferable method for the preparation of sodium on large scale? Give formula of dolomite, asbestos. What reaction occur when lithium carbonate is heated, sodium bicarbonate is heated? चैप्टर नंबर 2 में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें discuss the preparation of sodium hydroxide on commercial scale by diaphragm cell or Nelson cell. Describe the process of sodium metal manufacturing by Dawn cell. Complete and balance the following equation. Lithium oxide plus water, sodium oxide plus water, magnesium plus hydroxide. इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें write the 4 uses of borax. What is borax breed test? How is borax used as water softening agent? Why are borate glazes preferred over silicate glazes? Give any 4 uses of aluminium in our daily life. Give 2 similarities between carbon and silicate. Give reaction of P2O5 with cold and hot water. The aqueous solution of borax is alkaline. Give reason. What is carbonization? Explain the structure of CO2. Write 2 uses of sodium silicate. How borax can be prepared from selaminate? Give equation. Write names and formulas of oxyacid of nitrogen. Chapter number 3 में जो important long questions हैं उनमें write a note on aluminum silicate. Write a method for preparation of water glass. Also write uses of water glass.
हाउ विल यू कन्वर्ट बोरिक एसिड इनटू ब्रेक्स एंड वाइस वर्सा। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें वाई डज एक्वेरिजिया डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लाटिनियम, write down write down the dissimilarities between oxygen and sulfur, why SO3 dissolved in H2SO4 and not in water, describe ring test for confirmation of presence of nitrate ions in solution, justify that concentrated H2SO4 act as dehydrating agent by writing two equations. NO2 is a strong oxidizing agent. Prove that statement by examples. P2O5 is a powerful dehydrating agent. Prove it by giving example. How does P2O5 react with water in cold and hot states? How does HNO3 react with Cu copper manganese? How does NO2 react with Ki and H2S? Write 4 uses of nitric acid. How does nitrogen differ from other elements of its group? Write any two method for preparation of nitrogen acid. Write any 4 properties of sulfuric acid. Nitrous acid is a reducing agent as well as oxidizing agent. Justify by giving chemical reaction. Discuss different allotropic form of phosphorus. इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें गिव इम्पोर्टेंट यूज ऑफ हीलियम, व्हाट इज आयोडाइज्ड साल्ट, व्हाट आर फ्रॉन्स एंड टेफ्लॉन, गिव देयर यूजेस, व्हाई आयोडीन हैज metallic luster, how are halogen acid ionized in water, halogens are strong oxidizing agent, justify, why fluorine show peculiar behavior, why HF is a weak acid than other halogen acid. Write any 4 application of noble gases. What is haloethane? Write its formula. How XeF2 and XeF4 can be prepared. Write any 4 application of noble gases. Oxidizing power of halogen depend upon which factors? Give reaction of chlorine with cold and hot NaOH. What is bleaching powder? How bleaching powder is prepared from Hasenclever method. Write 4 uses of bleaching powder. चैप्टर नंबर 5 में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें डिस्कस द बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड, गिव इट्स यूजेस, व्हाट हैपन when bleaching powder react with dilute and concentrated H2SO4, NH3, HCl, H2O. Discuss relative reactivity of halogen as oxidizing agent. Also describe commercial uses of halogens and their compounds. Write chemical reaction of fluorides of xenon. इसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें आपने जो एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। चैप्टर नंबर 6 में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें राइट ए नोट ऑन बाइंडिंग एनर्जी, पैरामैग्नेटिज्म, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, पैरामैग्नेटिक कलर। चैप्टर नंबर 7 में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, what are homocyclic and heterocyclic compound, give their example, why is ethane an important industrial element, define isomers, write the name of 4 types, what is meant by a functional group, name typical functional group containing oxygen, define thermal cracking and steam cracking, what is meant by catenation, give examples, what is meant by cis-trans isomerism, define tautomerism and give examples, define alicyclic and aromatic compound, what is petroleum, give its origin, why is ethane an important industrial chemical, what are coal tar, give its fractions,
How will you define octane number? How it can be improved? What is iodized salt? Write the structural formula of two possible isomers of C2H10. Write the structural formula of possible isomers of butane. Describe important source of organic compound. What is catalytic cracking? चैप्टर नंबर 7 में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें व्हाट इज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन द मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफाइन आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथाइन, why the pi bond is more reactive than alpha bond, convert one butane to one butene, give 4 uses of methane, synthesize benzene oxalic acid from ethine, convert ethene into ethyl alcohol. What is Markovnich's rule? Write a note on acidity of ethene. Convert methane into formic acid. What is Rann-Nichols? Give its uses. Alkanes are less reactive than alkenes. Convert ethine into acetaldehyde. How cis and trans alkanes are produced? Give reactions. Convert ethene into ethyl alcohol. What is hydrogenolysis? What is biotest? Give its uses. चैप्टर नंबर 8 में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, गिव कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ alkenes and alkynes, prepare ethane from Koble electrolytic method, write down its mechanism, give the chemical reaction of ethene with O2 in presence of Ag2O, concentrated sulfuric acid, sulfur dichloride, HOCl। चैप्टर नंबर 9 में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें ब्रीफली डिस्क्राइब एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर, डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल, गिव 2 एग्जांपल्स, गिव रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद ओजोन, हाउ बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, what are aromatic compounds, why benzene is less reactive than alkene, what is Wurtz fitting reaction, give its importance, give 2 oxidation reaction of benzene, what are fused ring aromatic compounds, give reaction of benzene with SO3, prepare benzene from N-hexane sodium benzoate, give the mechanism of nitration of benzene, give reactivity of benzene to Wurtz electrophiles, show benzene cyclic structure with diagram, define aromatization। चैप्टर नंबर 9 में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें कन्वर्ट बेंजीन इनटू साइक्लोहेक्सेन, मैलिक एसिड, ग्लाइऑक्सल, बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड, what are Friedel-Crafts reaction, explain mechanism of alkylation and acylation of benzene, write any 4 chemical method for preparation of benzene, give reaction of benzene with respect to nitration sulfonation। चैप्टर नंबर 10 में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें प्रिपेयर एथाइल अल्कोहल, इथाइल एसीटेट फ्रॉम एथाइल ब्रोमाइड, what are primary, secondary and tertiary alkyl halides, give example of each, explain Markovnich's rule with suitable example, starting from C2H4Br, how will you prepare ethane and ethene, explain the following reaction, how do you compare SN1 and SN2 mechanism, how do we get alkyl nitriles from Grignard reagent, what are elimination reaction, give an example of E1 reaction, what is Grignard reagent, what are alkyl halide, give their general formula, what are types of nucleophilic substitution reaction,
convert ethyl alcohol into their respective halides by using PCl3 and PCl5. What is word synthesis? What are Grignard reagent? चैप्टर नंबर 10 में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें डिस्क्राइब SN2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड विद डिटेल, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्क्राइब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन E2 with example, how the presence of double bond can be detected by using Bayer's reagent। चैप्टर नंबर 11 में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें कन्वर्ट मेथनॉल इनटू एथेनॉल, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लाइसरोल, व्हाट आर रेक्टिफाइड सेपरेट commercial alcohol and absolute alcohol, why water has a higher boiling point than ethanol, convert methanol into ethanol and acetone into ethyl alcohol, what is Lucas test, give the uses of ethyl alcohols and methyl alcohols। Ethyl alcohol is a liquid while methyl chloride is gas, why, write the names and formulas of two polyhydric alcohols, define fermentation, give its conditions, absolute alcohol cannot be prepared by fermentation, why, what is wood spirit, how is it prepared from water gas, write equation for the reaction of C2H5OH and PbR3PCl5। चैप्टर नंबर 11 में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें how alcohol are prepared, give their properties and uses, what is ether, give its reactions, explain the following properties with reference to phenol, esterification, sulfonation। चैप्टर नंबर 12 में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें डिफाइन कैनेजिरो रिएक्शन, व्हाट इज सिल्वर मिरर और टोलन टेस्ट, डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ टोलेंस टेस्ट, हाउ एल्डिहाइड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड by failing solution test, write 4 uses of formaldehyde, write 4 uses of acetaldehyde, what is iodoform test, give its uses, how iodoform is prepared from acetaldehyde and ethyl alcohol, what is formalin, write the mechanism of the reaction of HCN with carbonyl compounds, prepare acetone from calcium acetate, give industrial preparation of formaldehyde, what is haloform reaction, give its uses, how acetaldehyde is converted into lactic acid, how aldehyde group can be prevented against oxidizing agent, how acetaldehyde react with ethyl alcohol, how can you distinguish aldehyde from a ketone। चैप्टर नंबर 12 में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें what is Canozero reaction, discuss its mechanism, what is E1 aldol condensation, give mechanism, write 4 tests by which aldehyde can be distinguished from ketone, describe the mechanism of the reaction of sodium bisulfate with acetone, how 2,4-dinitrophenyl hydrazine are prepared, write mechanism of ammonia derivative with carbonyl compound in general। चैप्टर नंबर 13 में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें व्हाट आर पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड लिंकेज, व्हाट इज निनोहाइड्रन टेस्ट, व्हाट आर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, गिव द मैकेनिज्म फॉर एस्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, name 5 dicarboxylic acid and give their formulas, what are Stryker's synthesis, give 4 uses of nitric acid, how carboxylic acid is converted into alpha amino acid, give 4 uses of acetic acid, how ethanol is converted into acetic acid and vice versa, define proteins, how do they differ from polypeptides, what are fatty acid, give their example, what are zwitter ion, give equation, how will you prepare acetic acid from ethines।
चैप्टर नंबर 14 में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, classify them and give example of each. What do you mean by renacity of fats and oils? Define the following: proteins, lipid, polymers. How is polystyrene prepared? Give its two uses. Give the structure of cholesterol. Write down uses of protein. What are saponification number and iodine number? What are fatty acid? Give example. How polymer are classified on the basis of heat effect. चैप्टर नंबर 15 में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें व्हाट आर फर्टिलाइज़र, व्हाई आर दे नीडेड, व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ गुड फर्टिलाइजर्स, गिव इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फर्टिलाइजर. Ammonium nitrate is useful fertilizer for many crops except paddy rice. Why? What are phosphatic fertilizer? What is their role in plant growth? Give formula of 2-phosphatic fertilizer. What is cement? Write its raw materials. What is setting of cement? Write its reaction. Define paper. Write name of 4 non-woody raw materials for the production of paper and pulp. How bleaching of pulp is done in Pakistan. Define cement and write down the raw material used for the manufacturing of cement. What is clinker? Why cement is called Portland cement? Describe the composition of good Portland cement. What is the function of nitrogenous fertilizer for growth of plant? चैप्टर नंबर 15 में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें व्हाट आर फर्टिलाइज़र, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र एंड देयर यूजेस. नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र इज़ एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ फर्टिलाइज़र फॉर क्रॉप. डिस्कस हाउ यूरिया इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज. पुट योर आंसर विद केमिकल इक्वेशन. डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट. चैप्टर नंबर 16 में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें व्हाट आर लीचेट्स, हाउ डिटर्जेंट्स आर थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ, व्हाट इज द डिग्री एंड हाउ इट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन द टर्म BOD, हाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर, डिस्कस द डिटर्जेंट एंड वाटर पोल्यूटेंट्स, राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ CO ऑन ह्यूमन हेल्थ. What do you know about water pollution? How is water polluted by industrial effluents? What are primary and secondary pollutants? What is COD? How it is measured?